सत श्री अकाल, you all are watching me at Punjab Kesari Navodaya Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव and I have with me very beautiful, talented and versatile actress with me who has established herself in the Tamil and Telugu industry and in the Bollywood, or I must say Hindi cinema also. She is making a niche on her own. Yes, I have with me beautiful Regina Cassandra. Regina, बहुत बहुत स्वागत आपका. कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया. Hi, hello, सत श्री अकाल as well. It's nice to be here today. It's an honor for me to have you here because looking at a female who's doing so much strong characters is so inspirational these days, and it's changing or defining the females in the industry, I must say. So hats off to you. Thank you. I'm really happy to be in that space along with a lot of other women who are doing the same thing. Doing very, very strong and defining characters. I think it's a great time to be an actress, especially with the whole OTT space. Giving a lot of actresses that scope and that platform to tap into their potential. A lot of strong characters have come out, and it's nice to be a part of this tribe. Definitely. Talking about Rocket Boys Part 2, one में हमने आपको देखा, you have played a very strong character, Mrinalini Sarabhai, the wife of Vikram Sarabhai. And now I want to know, as the second season is approaching, how excited are you to be a part of it all over again? Also, what traits of the first part did you take into the second part as well? Well, I am absolutely excited with the onset of season 2. I think it's a great thing that we did season 1 and season 2. We shot most of season 2 along with season 1 as an entire process, because it is their lives at the end of it is their lives at the end of the day, and the evolution of these people that Rocket Boys is about. It's about India's great scientists and not just their work life, or not just what they did for the country, but also their lives behind the scenes, their family lives, the kind of relationships they shared, and how these relationships somewhere also helped what they were doing for the country. So I think it's a well-rounded show when it comes to something like that, which is what season 2 also goes on to show, the parallels that all of these people face as human beings trying to do something. Acha, may I ask you, like, how do you go on for choosing your script? Because these days we see you in, जैसे आपने खुद भी कहा और मैंने भी कहा कि strong किरदार आपको निभाने का जो मौका मिल रहा है, is it coming your way, along your way, or you are choosing the scripts that way? Well, I am absolutely grateful that there are filmmakers, creators who are looking to tap into my potential as an actor, and I'm just happy. I've been around for a really, really long time. I've done a few Tamil Telugu films and one Hindi film, a Kannada film. So I wouldn't say it's about time that it happened, but I'm so glad that this time has finally come. And I'm really excited. Like I'm happy that they see me playing strong characters. Not and also we give so much importance to powerful characters or strong characters. I think just the fact that I'm able to portray a character that is standing up for herself, I'm really glad. I'm really glad that I'm seen in that light. But it's not to put down any other character that I've also already played or would play in the future. It is nice. It is nice to play a character that makes a difference, that stands up for herself, that is inspirational, and all of that. Definitely, it's a responsibility as an actor that I take up as well, or that any actress would take up for that matter. And it's a good responsibility. अच्छा, रजीना को पर्सनली किस तरह के किरदार करना पसंद है? जैसे मृणालिनी जी जैसा जो रियल लाइफ किरदार पे बेस्ड हो स्टोरी, या फिर पूरी तरह से फिक्शनल किरदार, या ऐसे किरदार जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए? एज एन एक्टर मुझे डिसाइड नहीं करना है. मुझे सब कुछ करना है. एज इन लाइक मे बी एक कैरेक्टर में कुछ अगर ग्रे शेड भी है तो क्या है, क्यों है, मुझे
मुझे एक्चुअली ना आई लाइक टू प्ले कैरेक्टर्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हु आई एम एज अ पर्सन. सो उस कैरेक्टर के स्किन के अंदर जाना, इन डेप्थ जाना बहुत पसंद है मुझे. इट्स नॉट लाइक कि होमवर्क करना पड़ेगा या कुछ भी. आई डोंट लाइक टू मेक इट साउंड सो यू नो important कि ये सब करना है, but just to understand the psyche behind the character, to take that effort to be like, अच्छा इनको ये पसंद है, but ये किसी को मारना पसंद है, ये क्यों पसंद है, क्या आता है उसमें, क्या प्लेजर मिलता है उनको, या कुछ करने का. it doesn't have to be a straightforward character. It does not have to be a heroic character. It doesn't have to be. It could be someone with faults. It could be someone who is very different. मुझे बहुत ही different characters play करना पसंद. अच्छा, मृणालिनी जी जैसा किरदार जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, उसके लिए तो ऑफ कोर्स काफी होमवर्क भी करना पड़ा होगा, है ना. एंड व्हेन देयर आर नो मच ऑफ रेफरेंसेस दैट आर अवेलेबल, हमने बुक्स में पढ़ा है, बायोग्राफीज में पढ़ा है, लेकिन हमने देखा नहीं है किसी भी लाइक बहुत ज्यादा. अगर देखा भी होगा तो ऑब्वियसली फिल्मी या फिक्शनल में, वो भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ आया है उनके ऊपर. तो वो किरदार प्ले करना थोड़ा मुश्किल नहीं हुआ, या आपने अपने आप से या डायरेक्टर के कहने पर कुछ रेफरेंसेस क्रिएट किए माइंड में, कुछ इमेजिनेशंस related to her? So Mallika Sarabhai and Revanta Sarabhai were a major part of our show. उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ ये शो किया है उन्होंने. एंड बहुत ही इनपुट्स दिया है. इनफैक्ट सेकंड सीजन में, फर्स्ट सीजन में मेरा इंट्रोडक्शन डांस भी उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, मल्लिका साराभाई ने. एंड उनके डांस ट्रूप भी आता है दर्पणा से. दे आर द वंस हु कम एंड डांस इन द शो. एंड सेकंड सीजन में एक बहुत ही अच्छा सा एक परफॉर्मेंस है, ब्लू लोटस है परफॉर्मेंस का नाम. एंड उसमें मालिका मैम ने ही कोरियोग्राफ किया है. रेवांता भी परफॉर्म करता है उसमें. हम दोनों साथ में डांस कर रहे हैं. So when it comes to getting into the skin of the character, Mrinalini Sarabhai has written a book. And yes, उतना भी इंफॉर्मेशन नहीं है बाहर, but अगर आप अंदर जाएंगे ना तो सब कुछ मिलेगा. like the moment you put your mind to it, कहीं से भी कुछ भी आता है. and that's the beauty of it. The moment the intention is out there कि मुझे ये करना है, कैसे करूं मैं, you once you start thinking about it, आपके माइंड में ही at the back of your mind ये एक रनिंग का ये होता है जो जब भी आपको कोई क्लूज मिलता है ना, तो यू जस्ट टेक इट इन. सो इट्स नॉट लाइक कि आपको बैठ के ये पढ़ना है, ये करना है. रेड हर बुक आल्सो, द वॉइस ऑफ द हार्ट. एंड मैंने यूट्यूब पे उनके परफॉर्मेंसेस देखा था, या इंटरव्यूज देखा था, जस्ट टू सी कि उनका रूट, लाइक व्हाट इज हर इंटेंशन, कहाँ से बात करती है मृणालिनी साराभाई, उनके थॉट्स कहाँ से आता है. सो व्हाटएवर लिटिल बिट दैट आई कुड ग्रैब ऑन टू, मैंने किया है. प्लेइंग अ वुमेन्स कैरेक्टर फ्रॉम अ पीरियोडिक एरा, 1940s के टाइम, 50s के टाइम की बात चल रही है यहाँ पे, तो उसे लाइक जीना एक बहुत ही डिफरेंट एरा में जीना होता है. सो व्हाट डिड यू लव प्लेइंग योर कैरेक्टर रियली वेल, एंड we have seen that on screen, that you make it so effortless with your expressions, and you're so relatable on screen that we can even relate to you, that yes, this is our Mrinalini Sarabhai, है ना? In fact, आई थिंक दैट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट कि जब भी मैं उनके सीन्स कर रही थी, स्पेशली द डांस portions, the performance portions, तो मैं उनको, I would close my eyes and think of her and think of doing it through her. As an actor, for me that helped a lot, because she बहुत सारे लोग उन्होंने देखा है, they know who she is. She's lived a long, beautiful life. बहुत किया है उन्होंने. तो there's been at least 75,000 dancers जो दर्पणा से ग्रेजुएट हुए हैं. So सब लोग देख रहे हैं. It was a huge responsibility to the dance community as well, कि एक pioneer, एक leader का, to make sure I hold that ground and that that grace and everything. So
बहुत सारे सीन्स में भी मैंने आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड उनकी पिक्चर, उन लाइक आई वुड focus on her picture or her dancing or try to see her moving, and it was so important for me कि मैं I hit it. See, it's not necessary कि मैं उनकी तरह हूँ, like we have the same characteristics या facial expressions, but just what Mrinalini Sarabhai would bring about. And my favorite is that जो कोई जो कोई like the audience जिसने भी मेरा वर्क देखा है over the last 10 11 years 12 years, उन्होंने भी कहा कि you portrayed the character so well, हमने रेजिना देखा भी नहीं इसमें, that for me was a big compliment. In fact, Malika Sarabhai herself said, I'm so happy that they got you to play my mother. Yeah, that for me. इसके बाद जो कोई भी कुछ भी कहे, it didn't really matter, because I mean, it didn't really matter, but I knew that I got it the moment she said that उन्होंने ये comment pass किया. If I may ask, do you take your characters home? No. Oh, okay. No. In fact, जब मैं रॉकेट बॉयज के लिए शूट कर रही थी या whatever, I was shooting for multiple other shows. शूरवीर के लिए शूट कर रही थी मैं, फिर साउथ में एक फिल्म के लिए साकनी डाकनी के लिए शूट कर रही थी मैं. तो फिर it's always मैं सिर्फ एक ही शो या मूवी पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं मे बी 2 or 3 पे काम कर रही हूँ at one time. 2 weeks के लिए यहाँ पे, 2 weeks के लिए वहां पे, 1 week या 1 दिन या 5 दिन. It's always like shuttling between characters, and for me that is so important because it keeps my mind active. जब मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं वो कैरेक्टर यहाँ पे नहीं लेके आ सकती हूँ मैं. So there's no chance of me taking my characters home, and it has always been like that. जब director cut बोलता है ना, then my mind is no more on what I did. It's moving on to the next thing. अच्छा okay, अभी ये master हो गया, अभी close करना है, अच्छा okay. But बीच में वो break है. I might have a conversation, I might not have a conversation, I might think about my next shot, I might have something else to do. So I don't see myself having ever taken my characters home. But कभी-कभार, especially when you play ऐसे real life characters, जब आप play करते हो ना, so there's a lot that you can actually learn. And Mrinalini Sarabhai से मैंने there are things like grace that I've learned from her. कैसे उन्होंने सब कुछ इतनी maybe अच्छी तरह से हैंडल किया है, एंड आपको सीजन 2 में वो देखना भी मिलेगा कि how she handled her personal life and her work life. मलिका मैम ने बोला कि जब मृणालिनी जी एक बहुत ही अच्छा सा रामायण का परफॉर्मेंस है उनका, जो उन्होंने she traveled the world and did it at one point, and Malika was really small. तो उन्होंने she would travel with her, take her. तो एक मदर होने के नाते, एक वाइफ, फिर भी she knew what she wanted to do. She was so strong willed. ये सब देखने पे और समझने पे, and the fact that मैंने उनका किरदार निभाया है, I had to sit with her and I learned those things. It felt wow. Women can actually do it all. सब कुछ तो कर सकते हैं. Absolutely. अभी मतलब हम अभी की विमेन की बात करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम सब अपने अपने करियर्स को लेके, हम लोग इतने लिबरल हैं, हमें इतना लिबर्टी भी मिला है सबकी तरफ से. बट उस एरा की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो विमेन हैज इवन सेट एग्जांपल्स ऑफ इंस्पिरेशन दैट हाउ दे हैव कैरीड देयर किड्स, दे हैव done all their work all together with the like management of family as well, जो आज के वक्त में फिर भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? उस टाइम पे भी बहुत ही मुश्किल था, उस टाइम पे और भी इतना मुश्किल था because we had things like dowry deaths, sati, female infanticide, things that were pushing women back, not even holding, pushing women back. आप आपको वहां पे ही रहना है, आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा, उतना ही करना है आपको. So for a woman to have a voice to speak, अगर कुछ कहना भी है तो कैसे कहे,
which is what Mrinalini Sarabhai did so well. उनके dance के नाते, उनके performances के नाते, and the connections that she had with the people, political world हो या science का world हो या कुछ भी हो, she brought it all together. And वो बात करती थी अपनी performances के through, you know, समाज से बात करती थी, ये नहीं हो सकता है, ये क्यों करते हैं हम, and that was through dance. So अगर आप एक dance performance देख रहे हो ना, तो आपको you immediately think, अच्छा, it makes you think. It's not like नहीं, मुझे नहीं देखना है, because performance तो इतना अच्छा है, मुझे देखना है, and through that you're actually striking a chord. You're learning कि अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं गलत कर, कैसे हम आप, you know, how do we stand up for ourselves as women, क्या कर सकते हैं हम. Then you also realize कि अच्छा, ये लोग तो कर रहे हैं, मैं भी join कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ. So many women have learned the Bharatanatyam was not a dance for the classes and the masses, you know. Bharatanatyam तो आई है हमारे you know old generation से, जहाँ dance सिर्फ थोड़े ही लोग करते थे, that in the king's palace, or you know, only one community was a dancing community. सब लोग dance नहीं करते थे. But she brought that into the classes, into the masses, making people understand that it's for everybody. So Regina, such characters, such strong roles on screen, does that bring like a change in your personality also, with all the takeaways that you have, that you take home with these characters? मैं characters को घर नहीं लेके जाती हूँ. But आप कहीं change करता होगा ना? But no, I'm very happy कि, you know, when I think when people see me itself in general, लगते हैं कि, you know, लगता है कि I can probably pull off a strong character or a strong role. And I'm just very glad that that's it, because at the end of the day, I also would like to speak, you know, मेरे work के through, I would also like to speak to my audience, speak to women, and somewhere inspire someone to do something. So I'm definitely happy that it's like that. It is how it is. I have no qualms. मैं बहुत ही खुश हूँ. मैं ऐसे strong roles play कर रही हूँ. I hope that I get to play more roles and more inspirational. Thank you so much, Regina, for talking to us on Punjab Kesari, and we would love to watch you in like more powerful roles in your future endeavors. And I wish you all the luck for your future. Thank you so much, Amita. Thank you.